हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर न्यू वीडियो इज आउट। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम योर साइड, बट इट विल हेल्प अस ग्रो। प्रीवियसली इस सीरीज में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीशन रिपेयर इज। जैसे अभी जो ये रिपेयर है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन आ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लेलिस्ट। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे इन द सीरीज। तो व्हाट इज डायरेक्ट रिपेयर? फर्स्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये सही है डायरेक्ट रिपेयर का। वाइल इन बेस एक्सीशन रिपेयर द सेक्शन ऑफ डीएनए containing the distortion is removed. The correct base is added and resealed. Yes, ये करेक्ट है। ओके, हमें बेसिक डिफरेंस ही पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स सी अदर स्टेटमेंट्स। आई विल शो यू व्हाई दिस आर रॉन्ग। इन डायरेक्ट रिपेयर homologous recombination repairs the broken region. Wrong. ओके, homologous recombination ये अलग है, राइट? ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करता है, तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिपेयर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फ्रॉम द स्टार्टिंग वी कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर बाय नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग विदाउट यूजिंग होमोलोगस टेम्पलेट। ये भी रॉन्ग है, राइट? डबल स्ट्रैंड ब्रेक, इसमें ही दो पाथवेज है, एक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। So both of these statements are wrong. 2B and 3B. Fourth statement is direct repair and exonuclease, a DNA polymerase and ligase are used. DNA polymerase and ligase ठीक है, but exonuclease in direct repair endonuclease यूज होता है। ओके, endonuclease, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेस एक्सीशन का भी यहाँ पे दिया है ट्रांसलेशन पॉलीमरेज, तो ये भी पूरा स्टेटमेंट गलत है। ओके, इनिशियल स्टार्टिंग से ही रीड करने में हमें समझेगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द मिसमैच रिपेयर एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई रिक्वायर्स repairs misincorporated bases which is not removed by the proofreading activity of DNA polymerase. Okay, mismatch repair. However, while doing so, it has to decide which strand of the DNA is newly synthesized and which one is parental. मतलब recognition करना है, ये parental strand है and ये daughter strand है। So how does it do this? Mismatch repair system does it by which one of the following ways? ये मतलब सपोज ये जो ऊपर का स्ट्रैंड है पैरेंटल है एंड ये नीचे का स्ट्रैंड है डॉटर। तो हाउ डज मिसमैच रिपेयर अंडरस्टैंड्स दिस और रिकॉग्नाइजेस दिस? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट रिकॉग्नाइजेस नियर बाय जीएटीसी सीक्वेंस, पार्शियल करेक्ट है। ओके, मतलब हाफ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स रीड अनदर। इट रिकॉग्नाइजेस एनी नियर बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नो। It recognizes a specific repetitive sequence, no. It recognizes the hemimethylated GATC sequence nearby, yes. Okay, hemimethylation, right? Hemimethylation से recognition होता है। Okay, a parental strand, this is methylated, and daughter strand is non-methylated. Okay, एक बार मतलब इसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद मिथाइलेशन होता है। Okay, hemimethylation status is used for recognition of the daughter strand and the parental strand. Some errors occur during DNA replication that are not corrected by proofreading activity
ऑफ द डीएनए पॉलीमर। ओके, हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है, मतलब इनकरेक्ट बेसेस को ये रिमूव कर सकता है, राइट, बट समटाइम इट फेल्स, so these are corrected by specialized repair pathways. Defect in the activities of the some of the following enzymes impair this process. okay, मतलब कुछ एंजाइम्स दिए हैं, इसमें अगर डिफेक्ट है तो रिपेयर प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज एंजाइम डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग above enzymes impair the process. तो फर्स्ट ए जो है इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 है एंड डीएनए लाइगेज है, सो ये इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एपी एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए ग्लाइकोसाइडेज रॉन्ग. ओके, व्हाई? एपी एंडोन्यूक्लियस सही है, बेस एक्सटेंशन में एपी एंडो होता है, बट डीएनए ग्लाइकोसाइडेज नहीं, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. ओके, यू कैन वॉच द वीडियो फॉर रेफरेंस, राइट, रेफरेंस के लिए आप वीडियोस देख सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपेयर. ओके, सो बी रॉन्ग है, ए करेक्ट है. 1 and 2 रॉन्ग. राइट, अभी म्यूट एस एंड म्यूट एल मिसमैच रिपेयर, यस ये करेक्ट है. म्यूट एस एंड म्यूट एल आर यूज्ड इन मिसमैच रिपेयर. रेक ए रेक एफ नो. ओके, तो 4 जो स्टेटमेंट है ए एंड सी ये करेक्ट है. जो ये डी स्टेटमेंट है इसमें रेक ए है एंड रेक एफ है, दिस आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेशन. ओके, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं ये एंजाइम्स, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो 4 स्टेटमेंट सही होगा. अ guanine base in DNA is susceptible to modification to 8-oxo-G because of oxidative damage, right? If the modified G residues are not removed by DNA glycosylase, MUT-M or FGP prior to replication, an adenine may be incorporated against 8-oxo-G, right? To avoid mutation, the cells have another DNA glycosylase called MUT-Y. However, when the gene coding for MUT-Y is deleted in Escherichia coli, the strain survives. This observation suggests that in E. coli. Okay? सी क्या बोला यहाँ पे, ग्वानिन का 8 ऑक्सोग्वानिन होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज. देन ये जो जी है दिस इज रिमूव्ड बाय म्यूट एम. दिस इज अगेन अ ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. तो म्यूट एम और एफजीपी जी को रिमूव करेगा, बट समटाइम दिस डोंट डू द वर्क. ओके, ये जी को नहीं रिमूव कर सकता. देन म्यूट वाई विच इज अनदर ग्लाइकोसाइलेज कम्स इन द पिक्चर. वो क्या करता है, म्यूट वाई एडिनाइन को इनकॉर्पोरेट करेगा अगेंस्ट दिस ए. ओके, अगेंस्ट दिस जी. 8 ऑक्सो जी की जो कॉम्प्लीमेंट्री ए से होगी फिर. ओके, दिस इज अनदर ग्लाइकोसाइलेज. तो रिपेयर के लिए 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट, बट इफ दिस म्यूट वाई इसमें म्यूटेशन है, म्यूट वाई में म्यूटेशन है, देन ऑल्सो स्ट्रेन सर्वाइव्स. हाउ हाउ द स्ट्रेन सर्वाइव्स? फर्स्ट स्टेटमेंट, म्यूट वाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीशन ऑफ ए इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट 8 ऑक्सो जी. मतलब ए के एक्सीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है. रॉन्ग.
alternate DNA repair pathway may substitute for the repair of A incorporated against 8-oxo-G. Yes, alternate DNA repair pathway substitute कर सकते हैं. Okay, as we saw, alternate repair pathway, इसमें already 2 pathways है. If G is not removed by mut M, mut Y will incorporate A. Okay, तो यहाँ पे बोला है mut Y अगर mutated है, then also strain survives, means there will be one more alternative DNA repair pathway that can substitute for the repair of A incorporated against 8-oxo-G. We know that जो G है guanine C के साथ बाइंडिंग करता है, राइट. तो यहाँ पे A की जगह C चाहिए. There will be alternative repair pathway. Third statement is incorporation of A against 8-oxo-G does not cause mutation in E. coli. ये भी wrong है. 8-oxo-G A base pair DNA distorts its structure in such a way that during the next round of replication, G is incorporated against A in the 8-oxo-G A base pair. No. Other statements are just confusing, मतलब कुछ तो अलग ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट जो 2 स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. Error free repair of double strand breaks in DNA is accomplished by error free, very important, homologous recombination, option 3, right. Error free होता है homologous recombination. Which one of the following protein catalyze branch migration activity in holiday junction? Branch migration is done by Ruby, option 2. Following statements are made about double strand break repair model of homologous recombination. Process of double strand break repair recombination is triggered by introducing a double strand break in a DNA duplex. Correct. Okay, we have to identify correct statement. So A सब में present है in all the options. In a process known as 3' end resection, the exonucleases along with the DNA helicase degrade one strand on either side of the break and generates 3' single stranded terminal. So ये DNA है. This is about double strand break repair. यहाँ पे पहले कट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, कट्स. तो बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर. डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स का इंट्रोडक्शन किया है यहाँ पे. नाउ दिस कैन हैपन एज अ रिपेयर, मतलब डैमेज हो सकता है, या फिर एक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में यूजिंग सम एंजाइम रिकॉम्बिनेजेस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को. मीन्स दिस कैन बी ड्यू टू डैमेज और दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम्स. तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे कंफर्म करेक्ट है. बी स्टेटमेंट में दिया है 3' एंड सेक्शन, राइट. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ओके, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. तो बी स्टेटमेंट ये गलत है. इफ यू आर कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट, यू कैन कीप इट ऑन होल्ड. ओके, आप इसको होल्ड में रख सकते हो. One strand of donor duplex is displaced due to formation of heteroduplex DNA and generates a displacement loop. ये करेक्ट है. ओके, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है. हाउ? डोनर ड्यूप्लेक्स जो होता है उसमें से एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस होता है. वाई? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोड्यूप्लेक्स DNA and that generates a displacement loop. तो B ये गलत होगा. Okay? Branch migration allows the point of crossover to move in 5' to 3' direction of recipient
स्टैंड, ये भी रॉन्ग है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कैसा होगा? अभी सपोज दिस इज अ 5 प्राइम एंड दिस इज अ 3 प्राइम, दिस इज अ 3 प्राइम, दिस इज अ 5 प्राइम, राइट? फिर ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, राइट? तो ये 3 प्राइम है, ये इंटर कर सकते हैं ऐसा, ओके? तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम चाहिए यहाँ पे, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगेन इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन कीप दिस ऑन होल्ड, सी द नेक्स्ट, completion of double strand break repair recombination may generate either crossover recombinant or non recombinant product, ये 100% करेक्ट है। हमें पता है एक क्रॉसओवर बनता है एंड एक नॉन क्रॉसओवर, ओके? तो क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट और नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट, तो ए सी ई ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट होगा, ओके? ऐसे जो स्टेटमेंट्स में आपको कंफ्यूजन है दैट यू कैन कीप ऑन होल्ड एंड चेक द अदर स्टेटमेंट। यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज causes advancing replication forks to stall, ओके? मतलब यूवी डैमेज है, उससे क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है स्टॉल होता है, स्टॉल मीन्स स्टॉप, रेप्लिकेशन स्टॉप होता है। टू अवॉइड अ कोलैप्स ऑफ द स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क जो स्टॉल है उसको कोलैप्स करना है, मतलब उसको स्टॉप नहीं करना है रेप्लिकेशन को, वी हैव टू कंटिन्यू द रेप्लिकेशन, मतलब सेल को कंटिन्यू करना है रेप्लिकेशन, व्हाट द सेल विल यूज, so basically the cell uses lesion bypass, option 2 ये करेक्ट होगा। So these are the repair PYQs, that's it for this video, I hope this would have helped you. If you find this video helpful, let us know in the comment section, like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.